Okay, so now we will move to test early versions with real users. So, what does it mean? As the name suggests, how we can test our early versions of product with real users, people who are already, waiting for our product, I would say. Because see, consumers are always look for the product which give them value for money, which not only claims but also fulfill their requirements and eventually provide them the solution of the problem they are looking for. So, entrepreneurs, this is the time when we will go and test our early versions of product with real users. Choose what to test. What does it mean? It means that you have to choose that what we are going to test, focus on riskiest assumptions. So there is a saying that hope for the best but prepare for the worst. उम्मीद बहुत अच्छे की करो लेकिन तैयारी बहुत बुरे की करो, राइट? दिस इज नॉट अ पैसिव एक ना सेंटेंस है, ऑप्टिमिस्ट. व्हाट इज ऑप्टिमिस्ट? Who always wish that wind would change, who waiting for wind to change, right? A pessimist will only pray or sit in doubt. And what does a realist do? Adjust the sail. It means आप एक बोट पे जा रहे हैं. जो ऑप्टिमिस्ट होगा वो हमेशा ये होप करेगा कि कोई बात नहीं, अभी नो नाव डूब रही है, डोल रही है, हिचकोले खा रही है, ठीक हो जाएगा, हवा सही हो जाएगी, हवा सही हो जाएगी. वो होता है ऑप्टिमिस्ट. पेसिमिस्ट, सब खराब हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा, क्या करूं, हवा तेज चल रही है, मेरा कुछ नहीं हो सकता. रियलिस्ट क्या होता है? वो कहता है हवा ठीक होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, मैं अपना काम करूं, मैं जरा सेल ठीक कर लूं, मैं जरा बोट पे जो कर सकता हूं वो करूं, ताकि मैं इस पोजीशन से बेहतर पोजीशन की तरफ जाऊं. राइट? सो फोकस ऑन रिस्कीएस्ट assumption. Will user pay for this? Do they understand how it works? Is this solving a real problem for them? राइट? जब भी आप टेस्ट करते हैं अपने अर्ली वर्जन को, किसी भी प्रोडक्ट के, किसी भी सर्विस के, you have to choose what to test. You have to go for the riskiest assumption. क्या यूजर पे करेगा? आपका एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है, आपने एक कोई साइट बनाई है जिसमें कि हम फॉर एन एग्जांपल अभी हम इंस्टेंस लेते हैं. देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड स्टेज. ये शार्क टैंक में भी आए थे. ये रीजनल ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरह इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया. राइट? सो दे आर द कॉम्पिटिटर ऑफ, आई वुड नॉट से दे आर कॉम्पिटिटर, बट दे, for them the biggest competition is other OTT sites. Those are already available like Netflix, Geo, Hotstar, Amazon and Z5, and list is never ending. So they themselves represented as a regional OTT, and their real competitor is Chopar, which is again a regional uh, OTT, right? So उनके लिए जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो क्या था? विल यूजर्स पे फॉर दिस? फ्री हम दे रहे हैं तो लोग आ रहे हैं, पेनिट्रेशन आ रहा है, बट विल यूजर पे फॉर दिस? दैट्स इज द riskiest assumption. Then do they understand how it works? Why would somebody pay for a OTT platform which is only regional? फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे चौपाल की मैं एक बात करता हूँ. चौपाल इज ओटीटी प्लेटफॉर्म. आप चेक करिएगा, जो एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन के लोग नहीं है जो मेरी बात सुन रहे हैं, दे आर नॉट फ्रॉम Punjab or Delhi, then please do a Google that Chopal is a platform which provides you majorly content into three languages: Punjabi, Haryanvi, and Bhojpuri. Right? So, do they understand how it works? Why? Because कोई भी कंज्यूमर सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज कंटेंट के लिए मेरे को पैसे. If they have option that they can explore Iranian films, Chinese film, Korean films, Indian films, English films, and there are endless possibilities in Prime and Hotstar and Netflix and so on. So why would they pay for regional? And the subscription amount
if we'll keep Netflix out of the scenario, because Netflix is the most expensive one because of their certain reasons and their quality. Let's not comment on that. But if we'll keep Netflix out of the context here, then their subscription model is almost similar. There is a variance of maximum 10 to 15% as compared to their competitors in the market. Is this solving a real problem for them? That's another question. That if I'm bringing out a new product to the market, which is a regional OTT, how does it solve a problem? But eventually it did. They both have become very good now, very big now. Chapal is doing international business very well. Why? Because they target the selective audience, right? So then they are not afraid of going into the market and test their early versions, and they have chose what to test. Will the users pay for this? Do they understand how it works? Is this solving a real for them? राइट, मैंने आपको ये एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करी है, फाइंड अर्ली यूजर्स। अब हम इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं, कौन है अर्ली यूजर चौपाल का या फिर स्टेज का? हरियाणा के लोग स्टेज के लिए, चौपाल के पंजाब के लिए, ऐसा रख लेते हैं, हम समझ लेते हैं। और या फिर नॉट, अगर हम रीजन की भी बात ना करें, हम रीजन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर दें, तो एनीबडी हु स्पीक्स और अंडरस्टैंड्स पंजाबी वेल, एनीबडी हु स्पीक्स एंड अंडरस्टैंड हरियाणवी वेल, सो दे आर देयर आइडियल कस्टमर फॉर स्टेज एंड चौपाल पर्सपेक्टिव। कुछ गलत तो नहीं है, राइट? अगर हम एग्जाम्पल के लिए समझ के चले, सो ये हमारे अर्ली यूजर्स हो गए। देन ऑप्शंस, पर्सनल नेटवर्क, ऑब्वियसली उन्होंने पहले अपने दोस्तों को भेजा होगा, क्योंकि ये हुआ है। जब चौपाल का ये लॉन्च हो रहा था, तो हमारे पास भी कुछ मैसेजेस आए थे, हमारे कुछ दोस्त के दोस्त, क्योंकि हम एक बड़ी कलेक्टिव एनवायरनमेंट में रहते हैं यहाँ पे, तो दोस्त के दोस्तों का कुछ लेना देना था उसमें, कोई किसी ने कुछ काम किया था या कोई से एसोसिएटेड था, तो हमारे पास भी मैसेजेस आए थे, गगन गो एंड चेक दिस एप्लीकेशन। हमने भी किया था चेक, हमने भी अपना फीडबैक दिया था। अब हमको उस वक़्त पे ये नहीं पता था कि ये एक बीटा वर्ज़न टेस्ट हो रहा है। हमने तो ऐप देखी थी, हमें अच्छी लगी थी। और ऑब्वियसली जब मैं उस वक़्त की अगर मैं याद करूँ, जो व्हेन वी यूज्ड टू use Chopal, and today's Chopal, it's very different, very well evolved, and you know ऐप का जो यूज़र इंटरफेस है और ऐप का जो एक्सपीरियंस है, इट इज़ बेटर देन अर्लियर। So it means that they worked on that part as well. And how they did it? Because they test the versions. Personal networks, then online communities, or Facebook groups, Discord. You see such groups on Facebook, right? Wherein people, drop their messages and drop their text that you can use this product and you can buy this product on. So there are so many times it happens that you are travel somewhere and randomly on the petrol pumps or on gas stations or in the highway restaurants, you'll find out people who selling the car, uh, these polish and everything, and they tell you that this is a promoting offer and you can get this thing for 200 bucks, 300 bucks. Usually, if you check on the online, yes, the price is 4 to 5 times. So why they do that? Because it's a testing phase, right? Early user कनेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ और उसको टेस्ट करवा रहे हैं, अगर वो ठीक है तो फिर उसको वो आगे सेल के लिए और ज्यादा प्रमोट करते हैं, तो राइट, उनको रियल टाइम फीडबैक मिलता है, फिजिकल पता चल रहा है कि गाड़ियां एक्चुअल में साफ हो रही हैं क्या ना। सो दिस इज वन क्लासिकल एग्जांपल, right? Then LinkedIn outreach, obviously, is one professional platform to do that, right? And then the product hunt, wait list from landing page, again, we are coming soon. So all these, options are always there to find your ideal customer, find early यूजर्स। मैंने जो एग्जांपल दिया था आपको चौपाल और स्टेज का, उसको याद रखिए, और किसी भी प्रोडक्ट जो भी आपके आसपास अगर हो, अगर आप थोड़ा सा इस क्लास के बाद ध्यान लगा के देखें, तो आप उसको फील करेंगे, आप उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखिए कि इस प्रोडक्ट के लिए अर्ली यूजर कौन रहा होगा। ट्राई टू engage your brain into such रिवर्स इंजीनियरिंग। मैंने सबसे पहले मॉड्यूल में बताया था क्या होती है। एक वॉच आपने ली, उसको खोला, फिर उसके सारे पार्ट्स को आपने रीअसेंबल किया, फिर बिल्कुल एंड तक पहुंचे, उसको दोबारा असेंबल किया, तो पता चला कि ये घड़ी कैसे बनी थी। उसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। ऐसी कोई प्रोडक्ट आपके आसपास हो, उसको देखिए, 10 मिनट लगाइए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस प्रोडक्ट का जो रिवर्स इंजीनियरिंग है, इस प्रोडक्ट का जो
अर्ली यूज़र है वो कौन रहा होगा?